Deepti. Now I am going to solve ICSE Class 10 Chemistry Board Paper 2026 Section B, starting with question number 3. Alex was given a solution of an unknown salt Y for analysis. He performed the following tests and recorded his observation. So, to a part of the solution Y, he added silver nitrate solution and obtained a white precipitate which was soluble in ammonium hydroxide solution. So, आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है anion के लिए. Next is, to the remaining solution he added a few drops of sodium hydroxide solution and obtained a pale blue precipitate. Based on the observation made by Alex, identify the anion. So silver nitrate में white precipitate means this is anion is chloride. Chloride anion. You have to mention the name complete. The cation present in salt Y. तो cation कौन हो सकता है? Now आप देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में पेल ब्लू, तो पेल ब्लू कलर किसको इंडिकेट करता है? Cu2+ यानी क्यूप्रिक. तो क्यूप्रिक आयन की प्रेजेंस शॉर्ट कर रहा है इन सॉल्ट वाई. हालांकि सॉल्ट वाई उन्होंने पहचानने को नहीं कहा, बट सॉल्ट वाई आपके पास क्या हो गया? CuCl2, कॉपर क्लोराइड इज द करेक्ट आंसर. Now second, study the reaction given below and answer the questions that follow. NaNO3 sodium nitrate है, sulfuric acid concentrated less than 200, NaHSO4 and HNO3. This is a method of preparation of nitric acid. Now give one reason for maintaining the temperature below 200 degrees Celsius. Reaction they have already given, they just want to know the reason why we have taken the temperature less than 200 degrees Celsius, because you know that sodium bisulfate जो है it will turn to sodium sulfate, and sodium sulfate which is formed at a higher temperature formed a hard crust which stick to the walls of the retort and difficult to remove them. So you can say that it will damage the glass apparatus. Second, you can also write that it may decompose nitric acid and wastage of fuels can be the points also. Now why is the concentrated sulfuric acid used in the above reaction? The simple reason is because it is non-volatile. If we use HCl instead of sulfuric acid, so which is volatile, HCl volatile हो जाएगा. So HNO3 will also carry HCl vapors को भी अपने साथ carry करेगा. तो we have to use sulfuric acid only because it is non-volatile. Now element A belongs to group 15 and period 2 of periodic table. तो K and L 2 है और period group 15 यानी 5 यानी कि 7 हो गया आपके पास atomic number. Identify the element A. So identification is this is nitrogen. Write the formula of the compound formed when element A combines with hydrogen. So N आपको पता ही है 15 है तो 3 माइनस हो जाएगा वैलेंसी एंड हाइड्रोजन 1, so it will become NH3 यानी कि फॉर्मूला बन गया NH3. एलिमेंट A कंबाइन विद हाइड्रोजन. तो आप इसको अभी एलिमेंट A को हम क्योंकि वो आइडेंटिफिकेशन मान चुका है इसलिए हमने N ले लिया, बट आप इसमें ऑब्लिक डाल के हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन ही रहेगा. यू कैन ऑल्सो राइट AH3 क्योंकि उसने बोला कि कंपाउंड का एक मतलब एलिमेंट A, अगर हम नाम ना दें तो. Draw the dot structure, dot cross structure, study the compound. Okay. Now you have to draw the dot structure of ammonia. क्योंकि अमोनिया ही बन रहा है. स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड इन बी अबव. तो आपको पता चल गया कि NH3 बन रहा है, तो आपको पहले वाले में नहीं ही देना. यू कैन ऑल्सो यू कैन राइट हियर दैट दिस इज N3 माइनस प्लस H प्लस. इट मीन्स NH3 or you can also write AH3. Now electron dot structure. So for nitrogen you have to take 1 to 1 lone pair and 3 electrons on all the 3 sides, and then you can add H plus in all the 3 sides before combination. Then after combination it will become nitrogen lone pair, 1 hydrogen, then again 1 hydrogen, then again 1 hydrogen. Or you can also write that nitrogen with H, H and H and 1 lone pair. This is the complete structure after combination. Now complete and balance the following reactions. So in first part C2H4 Br2 is given along with KOH. तो क्या बना दिया है? डाइब्रोमोइथेन is given. Dibromoethane plus 2 KOH, it will give C double bond CH दोनों तरफ आ जाएगा, then 2
KBr plus 2H2O। तो ये आपका कंप्लीट रिएक्शन करने के लिए यू नीड बैलेंसिंग, तो यहाँ पर भी 2 लगेगा, here also 2 KBr and 2 water, and on the arrow you have to write 200 degrees Celsius and boiling should also be there written. So now next is second part, NH3 in excess. If we take NH3 in excess with chlorine, then it will give NH3, यानी कि अमोनिया है, 8 NH3 can write here, and अच्छा 8 NH3, and then here balancing के लिए हम कर रहे हैं ना 3Cl2, and here what is the product form? Product form is N2 plus NH4Cl. For balancing we have to place 6 here, 3 here in front of chlorine, and 8 NH3 क्योंकि इसमें NH4Cl is forming. Now next is cane sugar, C12H22O11. In the presence of concentrated sulfuric acid, it will form 12C. C means sugar charcoal. In the solid form you have to write, and then 11H2O. If you write, you can write here sugar charcoal. This question 3 is over. Now coming to question number 4. Differentiate between the following pairs based on the criteria given the brackets. Acetic acid and sulfuric acid. So acetic acid is a number of replaceable hydrogen ion. It is a monobasic acid, so इसके अंदर कितना हो जाएगा? Only one replaceable hydrogen ion will be present there because it is a monobasic acid. Sulfuric acid, for sulfuric acid it is a dibasic acid, so it has 2 replaceable hydrogen ions with it. Second is electrolyte and metallic conductor, the particles conducting electricity. If it is a case of electrolyte, then ions are used which are very bulky. And if it is the case of metallic conductor, then electrons will conduct electricity and they are extremely small in size. Now second part, equal volumes of ammonia gas and chlorine gas are kept in 2 different containers. So here numerical is there, 2 different containers under the same condition of temperature and pressure. So in one it is ammonia, another it is chlorine, kept in 2 different containers. Find the number of molecules obtained in chlorine gas when the mass of ammonia is 34 gram. इसका 34 gram हमें given है. So first we find the molar mass of ammonia. Ammonia, you know, 14 plus 3, it is 17 gram. So number of moles present in ammonia, because it is given under similar condition of temperature and pressure. It means हम यहाँ पर Avogadro law भी लगाएंगे और आपको show भी करना पड़ेगा. Number of moles is equal to यहाँ पर कितना हो गया? It is given mass upon जो अभी हमने calculate किया यानी कि molar mass. So given mass in the question, it is given that it is 34 gram, and molar mass we have calculated it is 17. So it means 2 number of moles are present in ammonia. तो आपको यहाँ पर रिलेशन थोड़ा सा देना पड़ेगा क्योंकि इक्वल वॉल्यूम ली गई है तो दोनों के ही नंबर ऑफ मोल सेम होंगे, तो क्लोरीन का भी नंबर ऑफ मोल सेम होगा. यू हैव टू राइट वन लाइन इन बिटवीन. सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ किसके लिए पूछा गया हमें? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन क्लोरीन गैस इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स जितना आया है इनटू एवोगाड्रो नंबर Na जिसको हम कहते हैं. तो नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं, एवोगाड्रो नंबर इज 6.02 into 10⁻23. इट मींस इट विल बिकम 12.04 into 10⁻23, और यू कैन आल्सो राइट 1.202 into 10⁻24 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. 1.12 आ जाएगा ना, 6 to 12, तो 1.202 into 10⁻24 मॉलिक्यूल्स. मतलब बेसिकली आपको एवोगाड्रो नंबर को मल्टीप्लाई करना है. नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट, एलिमेंट्स PQR in the same period of the modern periodic table. Here PQR are in the same period of the modern periodic. P readily loses its one valence electron to form a stable ion. It means P belongs to any alkali metal. तो आपको पता ही है strong मतलब metal हो गया ये. Q shares its electron, sharing word आ गया bonding में, यानी covalent bond former, and but does not form ions easily. यानी ये कहीं हमारा group 14 element हो सकता है. R has high electronegativity, it means indication है कि ये halogen family, क्योंकि electronegativity across the period increase होता है.
Which element would be most difficult to reduce among P, Q and R? So P के लिए difficult to reduce, it means यहाँ पर आप your answer will be P, and reason आप देना तो नहीं है but आपके लिए क्योंकि लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आएगी अगर हम लेफ्ट साइड में रहेंगे तो it easily oxidizes, so it is difficult to reduce. तो P के लिए आ जाएगा which element is expected to have the smallest atomic radius among P, Q and R? तो स्मॉलेस्ट एमंग रेडियस किसका हो जाएगा, हम एम ए बाइनिंग के हिसाब से करते हैं तो रेडियस आपको पता है नीचे जाने पे इंक्रीज होता है और अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज होता है, तो इसमें से डिक्रीज में सबसे राइट में कौन सा आ जाएगा, तो विच एलिमेंट इज एक्सपेक्टेड टू हैव द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस, तो इट मीन्स यहाँ पर ये एलिमेंट आ गया आपके पास आर. नेक्स्ट इज अरेंज पी क्यू आर इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग आयनाइजेशन पोटेंशियल. तो आयनाइजेशन पोटेंशियल के लिए भी अगर हम देखेंगे ट्रेंड्स के लिए तो इंक्रीज करेगा अक्रॉस द पीरियड, तो पीरियड में जो सबसे एंड में होगा यानी हैलोजन फैमिली का सबसे ज्यादा होगा, तो आर इज ग्रेटर देन क्यू, मिडल में आ गए, एंड देन पी मतलब एक्सट्रीम लेफ्ट में आ गए यानी मेटल्स पे आ गए हम. फोर्थ पार्ट इज गिवन बिलो और सम केमिकल्स लेड नाइट्रेट कॉपर ये सारे दिए हुए यूजिंग सुटेबल केमिकल्स फ्रॉम द बॉक्स, आपको प्रिपरेशन करनी है सॉल्ट्स की. सो फर्स्ट हमारे पास आ रहा है हियर लेड कार्बोनेट, लेड टू कार्बोनेट वी हैव टू फॉर्म, तो आपको रिएक्शन देना है इसके अंदर से कौन कौन सा हम यूज कर सकते हैं, राइट. बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट, मतलब आपको सॉल्ट बनाना है लेड कार्बोनेट, तो लेड कार्बोनेट के लिए इस टेबल में से आप किसको यूज कर सकते हैं, लेड नाइट्रेट यू कैन टेक, एंड एट द सेम टाइम आपको इसके साथ क्या लेना पड़ेगा, सोडियम कार्बोनेट. So the reaction will become lead nitrate PbNO3 twice lead nitrate plus Na2CO3 sodium carbonate, बैलेंस ही है ये PbCO3 लेड कार्बोनेट की प्रेसिपिटेट आ जाएगी प्लस 2NaNO3 सोडियम नाइट्रेट. सो दिस इज अ डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन और आप मेथड समझ ही गए होंगे, दिस इज डबल डिकम्पोजिशन मेथड जो हमने फर्स्ट सॉल्ट के लिए यूज किया है. फॉर सेकेंड this is copper 2 chloride. For copper 2 chloride this is a decomposition reaction with action of acid on insoluble base या carbonate we can take. तो here we can take sodium carbonate. तो सोडियम कार्बोनेट और एसिड लेना है आपने तो 2HCl here we are taking, तो it will become CuCl2 plus water plus carbon dioxide. बैलेंसिंग के लिए 2HCl लगा दिया, तो इट मीन्स ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आ गई, नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की हाईली रिएक्टिव मेटल ने रिप्लेस कर दिया. आयरन 2 क्लोराइड के लिए एक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड ऑन एक्टिव मेटल वी हैव टू टेक, यानी कि यहाँ पर आपके पास आ रहा है Fe प्लस 2HCl यानी FeCl2 प्लस H2 गैसेज लिबरेटेड, यानी ये भी आपके पास आ गई नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अच्छा यहाँ पर सिर्फ डिस्प्लेसमेंट ही हो रही है, सेकेंड केस में आपकी डिकम्पोजिशन हो रही है, डिस्प्लेसमेंट इसके लिए है, दिस इज डिकम्पोजिशन आप देख रहे हो यहाँ पे. तो सेकेंड पार्ट इज फर्स्ट में डबल डिकम्पोजिशन, सेकेंड वाले में डिकम्पोजिशन और थर्ड वाले में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस.